Hello friends, here we are discussing different concepts related to education, which helps people teacher in their preparation for many academic and entrance examination. Welcome to Vibrant Classroom. Hello friends, how are you? So I think all are okay. So here in this class we discuss another psychological theory, that is social constructivism theory given by Lev-Vygotsky. तो आमे जमिति जानिछंती जे जदि if we compare the traditional approach of education, the way of education and the contemporary educational system, then we found in traditional process the knowledge should be transferred from more knowledgeable individual to the less knowledgeable individual. तो से जगह रे more knowledgeable individual को माने थिले ना टीचर थिले and less knowledgeable individual किए थिले ना स्टूडेंट थिले. तो आमे डिफरेंट साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट रे ए कांसेप्ट रो कथा हमें पाइबा. But in contemporary or in present scenario of education, we found the process of education is student centered and learner centered and learning centered. And in this approach, we believe the education through learning by doing approach. तो ए जगह रे पिला कोन गुटे निजे करिवो आ सिखिवो. तो आमे जते बेले किछि गुटे निजे करी कि आम भितरे नॉलेज टाकू बा आम भितरे अंडरस्टैंडिंग टाकू निजे कंस्ट्रक्ट करू, सेही प्रोसेस ऑफ सेही अप्रोच को नै कि आस्थिले किए ना लेव-वाइगोस्की एंड पियाजे. तो पियाजे को थ्योरी आमे नेक्स्ट क्लास रे पढिबा. तो आगे वाइगोस्की को कांसेप्ट पढिबा, किंतु पियाजे वाइगोस्की को पूर्वरु तांको कांसेप्ट को से देथिले. तो प्रथमे जेहेतु एटा गुटे एग्जाम रे बा गुटे सिलेबस रे थिला, तो मु एटा को फास्ट स्टार्ट करूची. तापर आमे नेक्स्ट क्लास रे पियाजे को जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी रो कांसेप्ट रे डिस्कशन करिबा. सो लेट्स स्टार्ट लेव-वाइगोस्कीज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी. So first, before going to the topic, first we understand what is the meaning of constructivism. Constructivism ro माने कोन? Constructivism is a learning theory that has foundation in philosophy, anthropology and psychology. तो ए कांसेप्ट तमे फिलोसॉफी रे भी पाइबो, एंथ्रोपोलॉजी रे पाइबो और साइकोलॉजी रे पाइबो कंस्ट्रक्टिविज्म कांसेप्ट. तो ए जो कांसेप्ट बहुत आगो बहुत पुराना कांसेप्ट नो, दैट इज ए न्यूली डेवलप्ड कांसेप्ट. तो ए कांसेप्ट रो जो थ्योरेटिकल बा जो प्रूफ आमे रिसेंट थ्योरीज गुडा रे ही बेसी मात्रा रे पाइबा. इन कंस्ट्रक्टिविज्म लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय टेस्टिंग आइडियाज एंड अप्रोच बेस्ड ऑन देयर प्रायर नॉलेज. तो तांको प्रायर बा तांको प्रीवियस नॉलेज को बेस करी कि से माने जते बेले नुवा नुवा जिनिस जेमिति कि ओन नॉलेज को डेवलपमेंट करिवे, टेस्टिंग आइडियाज अप्रोच ए सब जिनिस को जते न्यू नॉलेज को बा तांको नॉलेज को यूज करी निज नॉलेज को यूज करी से माने काम करि पारंती न्यू आइडियाज ऊपर बा अप्रोचेस ऊपर. तो सेही माने को सेही माने कंस्ट्रक्टिविज्म प्रोसेस रे जाउचंदी बोली हमें कहिबा. Learning is an active reconstruction and reinterpretation of experience. Reconstruction and reinterpretation of experience. अच्छी ताकू आउ थरे नुआ हमें कंस्ट्रक्ट करूचंदी. Time to time, day to day, also our existing experiences are reconstructed and reinterpreted. Learners construct knowledge using previous knowledge. तो ए जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करंती, नॉलेज कंस्ट्रक्शन करिबा बेले को फैक्टर बा को एट्रिब्यूट्स हेल्प करे. The first one is the previous knowledge, that is very important. Second one is the newly assimilated experiences, जोटा नुआ से माने जो एक्टिविटी रे पार्टिसिपेट कला पर जो न्यू एक्सपीरियंस गेन करूचंती, से न्यूली एसिमिलेटेड एक्सपीरियंस रु मध्ये से माने जो कंस्ट्रक्ट नुआ नॉलेज को करि पारंती. एंड न्यूली डेवलप्ड इनसाइट्स, जो न्यूली इनसाइटनेस जोटा डेवलप हिची इंडिविजुअल पाखरे, by using these insights also individual can construct their own knowledge and understanding. So these are the three bases of construction. Then in constructivist theory, learners' autonomy and initiative are accepted. Remember always, autonomy and initiatives are accepted. गुटे पिला कोन निजे करिया पई चाहूची ताडू बा तार गुटे ओपिनियन अछि. तो in process of constructivism we always accept these things and encouraged also. Students learn how to learn as teachers give training for the students in taking initiative for their own learning experiences. Here in the process of constructivism, teachers
the role of a teacher, that is as a facilitator. That means teacher provide only facilities to the individual for learning process. So teachers are facilitator. So as a facilitator, teacher only provide good and conducive facilities to the learner for the development of learning. Otherwise teacher ए जगह कौन करिवो ना पैसिव हेकी रहिकी पिलांकर जो कंस्ट्रक्शन से माने जहा करचुन ताको ऑब्जर्व करिवो आउ ताको गाइड करिवो. So that is the responsibility of the teacher in process of constructivism. Then according to Andrew Gray, the characteristics of constructivist classroom, constructivist गुटे classroom रो कौन कौन basic characteristics रहिबो देखिबा. The learners are actively involved. First, that is the learners are actively involved. The environment is democratic. मन रखिबा, the environment must be a democratic environment, the classroom environment. जदि आम construction बा constructivism रो कथा कहउचंती, तो first we must create our classroom democratic in nature. Then the activities are interactive and student centered. जो जगह रे constructivism concept रहिबो से class टा student centric रहिबो, as well as students are interactive with other students as well as with the teachers. And the teachers facilitate learning in which students are encouraged to responsible and autonomous. Okay, so teacher facilities the ठीक अछि, but at the same time teacher are also encourage the student to become more responsible individual and autonomous individual. Then furthermore, in constructivist classroom students work primarily in groups. तो first जो constructivism class रे generally students are worked in their group, and learning and knowledge are interactive and dynamic. There is the greater emphasis on social and communication skill as well as collaboration and exchange of ideas. तो collaboratively पढ़िबे, communicate समस्त सहित गुड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करैकी पाठ पढ़ा पढ़ी हेबे. तो एई जो कांसेप्ट रहिबो से जो गुटे डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स रो डेवलपमेंट होबो सेटा कंस्ट्रक्टिविज्म क्लास रे ही सेटा डेवलप हेई पारे. Then this is contrary to the traditional classroom where students work primarily alone. In traditional classroom सब पिला एकुटिया पाठ पढुतले, तापरे कोन होतला कोन नै अलग कथा. But in constructivism classroom we found the learning process are processed by group activity. Okay, so learning is achieved through repetitions and subject are strictly adhered to and guided by the textbook. Okay, so se textbook guide kari paribo, teacher guide kari paribo. So different concept are guided in the classroom situation to the learner for their learning process. तो एटी आमे आगुटे कथा को जिबा. तो constructivism, the concept of constructivism classified generally into two category, that is cognitive जो दीटा concept उपरे आमे जिबा, and the next one is social. तो cognitive constructivism Piagetଙ୍କର थिला, and social constructivism Vygotsky. Okay, तो आमे आज यही सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी भाइगोस्की थ्योरी पढ़िबा, आ नेक्स्ट क्लास रे आमे पियाजेट कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी को देखिबा. ओके, लेट्स स्टार्ट भाइगोस्की कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, एंड अदरली वी कंसीडर दैट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी. According to Vygotsky, social constructivism theory, cognitive abilities are gained through social guidance and construction. तो सेठी पियाजेट कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म रो कॉन्सेप्ट के डिफरेंट थिला, बट भाइगोस्की कॉन्सेप्ट रे से कोन कहिले जो हमर कॉग्निटिव एबिलिटी रो जो डेवलपमेंट होची, दैट डेवलपमेंट इज ड्यू टू द सोशल गाइडेंस एंड कंस्ट्रक्शन. तो इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड डिफरेंट सोशल प्रोसेसेस ऑन आवर डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस इज वेरी इंपोर्टेंट अकॉर्डिंग टू Vygotsky. And the development and formation of ability like memory, learning, problem solving and attention takes place through the role of culture as a mediator. So in the process of acquiring knowledge, memory बा में जो मेमोरी स्टोर करके रखुचंदी जो नॉलेज गुडा को पापर जो आम जो प्रोसेस रे पढुचंदी, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग,
the problem solving abilities and attention, all these things are maintained by culture, and culture at that time culture is become a mediator. तो आमे को भलिया वे रे हमकु निजु को रिप्रेजेंट करूछन, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय आवर कल्चर एंड आवर सोसाइटी. तो सेही वे रे आमे निजु को निजे तयारी करिबा बा आम भितर लर्निंग प्रोसेस को आमे तयारी करंती. His approach to child development can be considered as social constructivist form. तो ये जो अप्रोच टा चाइल्ड रो डेवलपमेंट जो कांसेप्ट टा जो थ्योरी बेस रे पिलार डेवलपमेंट हबो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड social constructivist form. And he believed that social interactions produce cognitive functions. So social interactions produced cognitive function. जते आमे सोसाइटी रे जते इंटरैक्ट होबा हमरो एक्सपीरियंस बढ़िबो, आमे सेते आम भितर कॉग्निटिव प्रोसेस रो डेवलपमेंट करि परिबा. ई सब कथा जो भाइगोस्की तांको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी रे कहिले. भाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फोकसेस ऑन चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग इन द क्लासरूम. यस, देन द थ्योरी ए कांसेप्ट गुडा को जोगुडा इंपोर्टेंट जोगुडा मार्किंग करूची सेही पॉइंट गुडा को टिके भलो से देखि जिबा, काहेना एई थ्रू एग्जाम को क्वेश्चन आसीबो. So this theory believed that cognitive functions are facilitated by social interactions. जो cognitive functions हमें कहउचंती, these are facilitated by the social interaction due to which learner need to engage in the same. तो आमे जतले नॉलेज कंस्ट्रक्शन कथा कहउचंती, तो इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन जो कथाटा आमे आगु जस्ट डिस्कशन करि के आसिलु, इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन आवर प्रायर नॉलेज कैरी वाइटल रोल. ओके, सो ए जो प्रायर नॉलेज आमे कोठु आनुचंती की आम सोसाइटी आम सराउंडिंग से प्रायर नॉलेज आमको दउछि, आमको विभिन्न एक्सपीरियंस से करउछि. जो एक्सपीरियंस बा प्रायर नॉलेज को नै कि आमे नुवा नुवा जिंस आगु आम भितरे कंस्ट्रक्ट करूछन. ओके, तो सेही कांसेप्ट रे एही पॉइंट टा को से डिस्कशन कला. देन भाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी एनाबल्स लर्नर टू गेन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्वायरी, सेल्फ डिटरमिनेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल थ्रू द कंस्ट्रक्टिविज्म. सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कांसेप्ट गोटे इंडिविजुअल पाखरे कोन डेवलपमेंट होबो ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलपमेंट होबो, इंक्वायरी बेस्ड कांसेप्ट ता भितरे डेवलपमेंट हो. ऑलवेज दैट इंडिविजुअल नीड टू इंक्वायरी एंड गेन नॉलेजेस, एंड आल्सो सेल्फ डिटरमिनेशंस, मोर कैपेबिलिटी कोन मु कोन करि परिबी से कांसेप्ट ता भितरे डेवलपमेंट होबो, as well as the highest mental order, that is critical thinking skill, is also developed within the individuals according to constructivism theory. Then it also focuses on learning by discovery and exploration. आमे जते डिस्कवरी आमे जते माने नुवा नुवा कथा को एक्सप्लोर करिबा सोसाइटी रे, सराउंडिंग रे, एनवायरनमेंट रे, आ जते नुवा नुवा जिंस को डिस्कवर निजे करिबा आम भितर सेते नुवा नुवा नॉलेज कंस्ट्रक्शन हबो. तो एई थ्योरी एई लर्निंग प्रोसेस को मध्ये एनकरेज करे. सो दीज आर द बेसिक कांसेप्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी. तो आगु को जिबा मेजर थीम्स ऑन द थ्योरी. कोन कोन थीम एठी रहिबो बेसिकली सी थ्योरी गुडा, थ्योरी को जो थीम गुडा सुइटेबल करूची बा थ्योरी को मेंटेन करिया रे जो थीम गुडा हेल्प करूची. सो दीज थीम्स आर कंसीडर्ड एज मेजर थीम्स ऑन दिस थ्योरी. तो को थीम को हमें देखिबा. The first one is role of social interactions in cognitive development. Social interactions in cognitive development रे social interaction रो role कोन से जिंसटा को फर्स्ट थीम रे रखा आइछि. Then second one is the more knowledgeable other, that is MKO. बहुत important point मन रखिबा. MKO very simple, बहुत important but very simple. MKO. Okay, तो से concept को हम टिके देखिबा. The next zone of proximal development, ZPD, zone of proximal development, another theme. Then last one is the scaffolding. Okay, so here in the process of constructivism, social constructivism learning theory, we found there are 4 attributes or themes, that is role of social interaction in cognitive development. Social interaction le kemiti cognitive development hochi. The next one is the MKO, more knowledgeable others, then ZPD, zone of proximal development, and last one is the scaffolding. तो ये जो स्कैफोल्डिंग रो कांसेप्ट टा एक्चुअली जो भाइगोस्की देइ नथिले, जेरोम ब्रूनर, ओके, जेरोम ब्रूनर साइकोलॉजिस्ट से ये स्कैफोल्डिंग रो कांसेप्ट देइथिले. मन रखिबा. ए कांसेप्ट भी बेले बेले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे बा एग्जाम रे आसे, तो ए कथाटा को मन रखिबा. स्कैफोल्डिंग कांसेप्ट जेरोम ब्रूनर देइथिले, बट
without scaffolding we cannot complete the theory of social constructivism. Okay, so आमे scaffolding टाको भी एठी discussion करिवा. Then let's start. गोटे गोटे point को आमे जिबा. The first one is the role of social interaction in cognitive development. What is the role of social interaction in process of cognitive development? Language play a central role in mental development. देखो language गोटे very important concept. जदि language रो proper development न होईची तो हमर mental development भी केबे ensure successfully हमें करि परिबा नाही. बट Vygotsky को concept टिके different थिला. से कहउथिले आगे cognitive development हबो तापरे language रो development हबो. बट जो Vygotsky को concept रहिला कोन first language development हबो तापरे cognitive development हबो. अच्छा ताले इडी हम गोटे concept को बुझिबा. तो जदि cognitive development first हला तापर language हला से तो गोटे another concept. बट लैंग्वेज रो जो कांसेप्ट फास्ट आमे पाऊ कोठु पाऊ आम सराउंडिंग रु पाऊ आम सोसाइटी रु पाऊ आम फैमिली रु पाऊ जो लैंग्वेज रो कांसेप्ट जोटा को कि आमे मदर टंग कहउचंती आउ से टंग रे बा सेही कथा सेही माने जो लैंग्वेज को आमे वेरी प्राइमरी स्टेज रु आम लाइफ रे आमे यूज करथाउ. तो दैट इज ए सोशल कांसेप्ट. तो सेही कांसेप्ट को फोकस करले किए ना Vygotsky से कहिले जे लैंग्वेज इज द फर्स्ट थिंग व्हिच ए इंडिविजुअल लर्न. आफ्टर दैट थ्रू लैंग्वेज an individual can develop the mental processes. So language play a central role in mental development. The language is the main means by which adults transmit information to the children. As a teacher आमे जते बेले हमर जो कांसेप्ट को आमे जहा जानि चंती बा आमे जहा पढिया पई चाहू चंती आमे ट्रांसफर केमिति करू थ्रू लैंग्वेज बा आमे जदि कहिबा जे ठीक अछि ट्रेडिशनल क्लासरूम रे आमे लैंग्वेज को यूज करथुलु लेक्चर मेथड रे पढुथुलु. बट इन प्रेजेंट सिनेरियो वी आल्सो when we teach by the help of collaborative and cooperative approach or constructivism approach, at that time we also create groups, and for these groups when we provide any activity with activity we also provide some sorts of instructions. Okay, आमे सेटा orally हो written हो से language को use करी के आमे ताको instruction दो, and according to the instruction they should perform their activities. So ए जो communication ए जो आमे जो process रे transmit करूचंती आम concept गुडा को तो एडल्ट गुटे चिल्ड्रन मान को जो ट्रांसमिट करिवो डिफरेंट इंफॉर्मेशन थ्रू द लैंग्वेज. सो लैंग्वेज इज वेरी इंपोर्टेंट मीन्स फॉर एनीवन. द लैंग्वेज इटसेल्फ बिकम ए वेरी पावरफुल टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल एडाप्टेशन. तो लैंग्वेज टे इंटेलेक्चुअल एडाप्टेशन पे वेरी पावरफुल टूल आ बोली हमें कंसीडर करिवा. तो वर्तमान देखिबा रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इज लैंग्वेज. केते प्रकार लैंग्वेज केमिति हमकु सोशल इंटरेक्शन रे हेल्प करूची वर्तमान टिके डिस्कशन करिवा. Vygotsky believed that language was the most important tool that human could utilize. Yes, of course, yes. कारण आमे कोन देखिचंती कि धर जो बाटर गला बेले चारि पांच जण म आसिला बेले बाटरे देखिली चारि पांचटा छेली बसी कि तांको भीतर कथा वार्ता होउचंती आ देश विदेश विभिन्न प्रकार कथा वार्ता होउचंती. एमिति केबे आमे देखिचंती कि नो, बिकॉज़ ह्यूमन बीइंग्स आर द स्पेशल एनिमल्स आ तांको पाखरे लैंग्वेज को यूटिलाइज और यूज करिवार कैपेबिलिटी अछि. ड्यू टू दैट दे आर वेरी स्पेशल. जदि आमे लाइफ रे केबे भाबो चिंता करो जे आमे कम्युनिकेशन करि पार न थांतु थ्रू लैंग्वेज ताले हम लाइफ टा केमिति हि थांता. ओके, सो हमकु ए जो स्पेशल आम पाखरे जो एबिलिटी अछि से एबिलिटी टा ही हमकु स्पेशल इंडिविजुअल करे. Vygotsky believe that there are three forms of language. कोन कोन देखिबा आमे. फर्स्ट वन इज द स्पेशल सोशल स्पीच जोटा कि एक्सटर्नल इन नेचर सराउंडिंग आ जोटा कि एज 2 पर्यंत देखा जाए. कारण एज 2 पर्यंत जनरली जो न्यूबॉर्न बेबीज अछंती जेतले नुआ नुआ कथा बा कहिबा स्टार्ट करंती एट दैट टाइम दे ओनली इमिटेट द लैंग्वेज व्हिच आर यूज्ड इन देयर सराउंडिंग. दे ओनली इमिटेट दिस लैंग्वेज. तो एटा एक्सटर्नली तांको इन्फ्लुएंस करे लैंग्वेज. तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दैट पीपल यूज टू टॉक विथ अदर पीपल. The next one is the private speech. That is the internal or inner speech that a person आउ एटा केबे हुए ना एज 3 पाखरु स्टार्ट हो जाए एज 3 4 एमिति चले. तो इंटरनल कम्युनिकेशन दैट ए पर्सन डायरेक्ट्स टू देमसेल्फ निजो को निजे से सेते बेले डायरेक्ट करि पारे. ओके, तो इंटरनली ता पाखु गुटे लैंग्वेज आसे. ई 2 वर्ष पर्यंत पिलांकर इंटरनली किछि लैंग्वेज आसेनी. बट 2 वर्ष परे जस्ट स्टार्ट हो जाए दे शुड सेल्फ डायरेक्टेड इन नेचर. भितराडु ता गुटे किए डायरेक्शन दिए एटा कर सेटा कर ए काम हबो एटा नाही भाबिबा ये करिबा. ई जो विभिन्न डिफरेंट कांसेप्ट जो हमर मेंटल प्रोसेस रे रहिला सेटा प्राइवेट स्पीच हमर करे जोटा कि हम इनर बा इंटरनल स्पीच.
It serves as an intellectual function. Okay. Then the next one is silent or inner speech. तो एटा एज 7 पाखरु स्टार्ट हेकी चले आगु को जोटा कि आम भितर आसे किंतु आमे ताको परिप्रकाश न करी किछि रखंती किछि बाहर करंती एई जो कांसेप्ट रे रुहे आमे ताको सप्रेस करि परिबा आ ताको रेगुलेट वे रे आमे ताको यूज करि परिबा एई प्रोसेस रे जो लैंग्वेज टा बा जो स्पीच टा आम भितरु आसे सेई जो लैंग्वेज टा को आमे बा स्पीच टा को आमे साइलेंट इनर स्पीच बोली कहू. दैट इज द प्राइवेट स्पीच डिमिनिशेस द ऑडिएबिलिटी. हमकु लोक सुनि परंत आमे कोन भाबुचंती बा आमे कोन कहउचंती आमे सेटा मने मने रखि दउ सेटा हला साइलेंट इनर स्पीच diminish its audibility until it become a self regulating function. जते पर्यंत सेटा self regulating function होइछि सेते पर्यंत diminish करि रखे ता audibility. So these are the basic concept of social interaction in cognitive development. Then come to the next point, that is MKO, more knowledgeable others. Okay, तो very simple, more knowledgeable आमे समस्त जानि चंती जे गुटे ट्रांसफर ऑफ हीट रे आमे देखिबा गुटे एटा हला मोर हीट एमएच ता पाकु गुटे लगेई गुटे लेस हीट रो ऑब्जेक्ट रखिले देखिबा किछ समय गला परे ए दीटा सारा रो टेंपरेचर पाखा पाखी सेम आस जइथिबो गुटे इक्विलिब्रियम पोजीशन को समान दी जण पळी आस्थिबो. दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट. तो आमे मोर हीट जो ऑब्जेक्ट रु हीट टा कोन हला ना ऑटोमेटिकली लो हीट ऑब्जेक्ट पाकु ट्रांसफर हेई गला. तो सिमिलर कांसेप्ट से कहउचंती जदि आमे किछि नुवा जिंस जानिया पय चाहुचंती बा आमे जदि कोठी गुटे डाउट रे रहिले ए तो गुटे ट्रांसफर रो कथा तुमको बुझिया पय कहिली मोर आउ लेस बट कांसेप्ट इज टोटली डिफरेंट. इन दैट कांसेप्ट ओके व्हेन समवन नीड हेल्प धरा जो समस्त बीएड करूचो बा जो माने टीचिंग जॉब पय जो ओएसएसटीटी जॉब में जो अप्लाई करिचो एग्जाम दबो बा टीचिंग प्रोफेशन को जिबा पय जो एग्जामिनेशन होची सेतरे तमे पार्टिसिपेट करिवो. तो ए जो प्रोसेस रे तमरो जोटा हेल्प दरकार तो तमे जीवो तम लोकल जो एमएलए अछंती बा एमपी अछन ताका पाके जाई कहिवो जे सारे मु बुझी परनु एई एमकेओ कांसेप्टटा मते रे बुझी दियु सी बुझेबे की. तो स्पेसिफिकली सर्टेन टॉपिक रे जो मान को पाखरे मोर नॉलेज अछि व्हेन वी फेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक वी नीड हेल्प फ्रॉम दिस इंडिविजुअल्स दोज हु हैव मोर नॉलेज. ओके जो मान पाखे बेसी आमठू बेसी नॉलेज अच्छी आमे सी किए भी पारे. ओके माने सी जे गोटे पर्टिकुलर इंडिविजुअल एबे सेमिति नु जी किए भी ही पारंती. तो आमे तांको पाखु जतले हेल्प नीड करूचंती सेई हेल्प हमकु से दबो जो लोकटी दबो दैट इंडिविजुअल इज नोन एज मोर नॉलेजेबल अदर. तो द एमकेओ इज एनी पर्सन हु हैज हायर लेवल ऑफ एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग देन द लर्नर्स इन ए सर्टेन टॉपिक. गोटे पर्टिकुलर टॉपिक रे लर्नर को से बुझी पारिबो बा लर्नर रो प्रॉब्लम को से बुझी की ताको सॉल्व करि पारिबो बा ता पाखरे जनरल लर्नर अपेक्षा आउट के अधिका ता पाखरे डेवलपमेंट हेइथिबो सेही प्रकार इंडिविजुअल को हमें एमकेओ कैटेगरी रे रखिबा. तो काहे की रखिबा आगु को हमें देखिबा. तो एमकेओ रेफर्स टू समवन हु हैज ए बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर्स. जनरल लर्नर्स को अपेक्षा तांका पाखरे टिके बेटर अंडरस्टैंडिंग थाए और हायर mental ability level थाए. With respect to particular task, process or concept, for example teachers, other adults, advanced students and sometimes even computers. तो object भी बेले बेले MKO हेई पारे. तो जेमिति कि टीचर्स रहिले स्कूल ले yes they are very knowledgeable individuals कारण से माने पढौचंती तो तांका पाखरे से कैपेसिटी टा अछि. सेमिति अदर एडल्ट्स हम घरे पेरेंट्स रहिले बा हमर जो बड़ भाई भौणी रहिले तो दे आर आल्सो मोर नॉलेजेबल देन द जनरल लर्नर्स. तो एडवांस स्टूडेंट सही क्लास रे जो माने एभव अचीवर्स अछंती ओके तो सही इंडिविजुअल को पाखरे भी मोर नॉलेज थाई पारे. इवन कंप्यूटर इंटरनेट ए सब जो फैसिलिटी तांको पाखरे लॉट ऑफ रिसोर्सेस अछि तो सेही मान को हमें एमकेओ बा मोर नॉलेजेबल अदर्स बोली कहिबा. ओके तो मोर नॉलेजेबल अदर्स कोठी तांकर दरकार कोन हमें नेक्स्ट रे देखिबा. दैट इज जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कोन तो ए देखिबा पूर्व आगे चित्रटा को देखिदबा तापर एठी हमें क्लियर हे जिबा. ठीक अछि. तो ए जो ए पर्सनटा जोटा अछि ए पर्सनटा हला टू इजी जोन व्हाट द स्टूडेंट कैन डू विदाउट हेल्प. दैट मींस मु गुटे पिला नेली क्लास 10 रे से 10th रे पढुछि. ठीक अछि. तो मु जते बेले क्लास 7 रो कांसेप्ट रखिली
तो से पिलाटा जेहेतु यस माने मु कहूची एवरेज इंडिविजुअल जानिची पाठ सेमिति नुहे जे बहुत ये एवरेज इंडिविजुअल तो मु जो तेतबेले ताकू क्लास 7 रो कांसेप्ट देबी दैट इंडिविजुअल कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लास 7 बिकॉज दैट इज इन जोन ऑफ 2 इजी ओके जोन आमे गुटे आम एरिया को देखिबा से एरिया रे आमे जो एरिया रे हमरो परफॉर्म लर्निंग को परफॉर्म करू से एरिया को जोन एठी आमे कंसीडर करछती तो क्लास 7 जोन टा इजी जोन कहा पाई ना सी क्लास 10th पिला को पाई ठीक अछि नेक्स्ट आसला कोन ता परे जो गुटे जोन टे देखिबा सेटा हला तमरो जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दैट इज ए एरिया जोन ओके से जो एरिया बा जोन रे कोन होबो क्लास 10 पिला को से क्लास 10th रो पाठ आसीबो जोटा की से पिला सबु जिंस करि परछि किछि जिंस रे से रहि जाउछि ओके सेई जो जोन टा जो जगह रे से रहि जाउछि जदि से क्लास 10 जो जो पार्ट से कंप्लीट करि दउछि से ठू जो इजी जोन को पळे आसीबो किंतु जो जगह रे से प्रॉब्लम फेस करूछि सेई कांसेप्ट गुडा को जोन रे रहिबे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रे रहिबे ओके दैट मींस इन दैट जोन स्टूडेंट नीड हेल्प फ्रॉम एमकेओ एई जोन रे जो प्रॉब्लम्स आसीबो से प्रॉब्लम को आमे केमिति सॉल्व करबा बाय द हेल्प ऑफ एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर को पाखरु आमे हेल्प नै कि एठी एई जगह रे हमर प्रॉब्लम सॉल्व करबा एंड द लास्ट जोटा हमर आउटे जोन जोटा अछि दैट इज टू हार्ड जोन बियॉन्ड द स्टूडेंट्स एबिलिटी दैट मींस मु 10 क्लास रे पिला को पढौची मु गुटे +3 पाठ पिला को देबी तो सेटा बियॉन्ड देयर जोन ओके तो बियॉन्ड देयर स्टूडेंट्स एबिलिटी तो सेटा जो कांसेप्ट को आमे टू हार्ड जोन बोली आमे कंसीडर करू तो ये जो को माने लर्नर असिस्टेंस इन जेडपीटी रुहंती मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स टीचर पेरेंट्स पीयर देन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देन स्कैफोल्डिंग आमे आगु बुझिबा पढिबा केमिति स्कैफोल्डिंग होउची तो एई कांसेप्ट रे आमे जो देखिले कोन ना तीनटा जोन रहुची गुटे हला टू इजी जोन जोटा की पिला को कैप्चर रे रहिबो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो जोन रे की पिला हेल्प नीड करिवे असिस्टेंस नीड करिवे फ्रॉम द मोर नॉलेजेबल अदर्स एंड टू हार्ड जोन दैट इज द बियॉन्ड देयर एबिलिटीज तो से जगह को आमे जिबा नाही द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द एरिया ऑफ लर्निंग दैट ए मोर नॉलेजेबल अदर्स एमकेओ असिस्ट द स्टूडेंट इन डेवलपिंग ए हायर लेवल ऑफ लर्निंग Vygotsky sees that ZPT as the area where the most sensitive instructions or guidance should be given तो जो एरिया रे सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन दिया जाए आउ प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए allowing the child to develop skill कोन पई ताकू दिया जाए ना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स दे विल देन यूज ऑन देयर ओन निजे निजे सेगुडा को पाइला परे सिखिला परे बुझिला परे ताकू यूज करि परिबे एंड आल्सो डेवलप देयर हायर मेंटल फंक्शंस तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जते गुड इंडिविजुअल पास करि जिवो दैट मींस दैट इंडिविजुअल क्लियर ऑल द डाउट्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो आमे नेक्स्ट को आसीबा स्कैफोल्डिंग तो स्कैफोल्डिंग जिबा पूर्वरु आमे गुटे स्टेटमेंट देइछि से स्टेटमेंट को टिके बुझिबा व्हाट चिल्ड्रन कैन डू इन कोऑपरेटिवली टुडे कोऑपरेशन लिखा हिछि तो आमे ताकू कोऑपरेटिवली टुडे भी कहि परिबा ही कैन डू इट अलोन टुमोरो आजिका डेट रे गोटे पिला जते बेले कोन करूची ना कोऑपरेटिवली किछि काम गोटे करूची तो आमे देखिबा किछि दिन गला परे दैट इंडिविजुअल कैन डू दैट वर्क इन अलोन ओके तो सेही प्रोसेसटा जो प्रोसेस रे पिला को आमे एते हैबिचुएटेड कर देबा हेल्प देई की तापर जतले हेल्प आमे काढी आनिबा से पिलाटी निजे से कामटा को करि परिबो केमिति करिवो वर्तमान देखिबा Scaffolding consists of the activities provided by the educator or more competent peers. Educator বা more competent peer help जो assistance करूचंती जो help दउचंती to support the student as he or she is led through the zone of proximal development. तो zone of proximal development रे जो जगह रे पिला अछंती जो देखो हमको हेल्प किए करूचंती ना एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स हमको हेल्प करूचंती कोठी जेडपीडी रे हमको को माने हेल्प करूचंती ना एमकेओ हेल्प करूचंती ये जो प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग तो इटा हेल्पिंग टा टिके माने सुनिया पे टिके भल लागु नथुबो ताको एसेसिंग लिखि परिबा बा एसेस जो असिस्टिंग ओके तो असिस्ट करिबा हेल्प करिबा एई प्रोसेस पई जो
ये जो प्रोसेसटा एमकेओ जेडपीटी रे जो प्रोसेस रे हेल्प करूछन दैट प्रोसेस इज नोन एज स्कैफोल्डिंग एंड सपोर्ट इज ट्रैप्ड ऑफ एज इट विथड्रॉन सपोर्ट इज ट्रैप्ड ऑफ और विथड्रॉन जोटा बाहर करी आनिबा केते बेले इट बिकम्स अननेसेसरी एंड मच एज स्कैफोल्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम बिल्डिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ओके दैट मींस जते बेले देखो गोटे इनिशियल स्टेज आउट फाइनल स्टेज तो लर्निंग रो दीटा प्रकार स्टेज को हमें डिफाइन कले ठीक अछि तो स्कैफोल्डिंग प्रोसेस टा एटी मोर पाइबो जते फाइनल स्टेज आडू जीवो से सेते लेस ही जीवो प्रोसेस टा लेस ही जीवो कारण देखो आमे विथड्रॉ करबा ताको आमे इनिशियल स्टेज रे हेल्प कले जते बेले सी कॉम्पिटेंट होबा स्टार्ट करिवो इनिशियल स्टेज रु आसिला कॉम्पिटेंट हला जते सी कॉम्पिटेंट होबो आमे हमर जो हेल्प टा हमर जो असिस्टेंस टा कमे आनिबा and at the final stage say without help of any others that individual can do that particular task the student will then be able to complete the task again on his own निजे निजे से कामटा को से कंप्लीट करि परिबो तो ए जो स्कैफोल्डिंग रे कोन कोन दरकार ना इट प्रोवाइड सपोर्ट इट फंक्शंस एज a tool scaffolding is also seems as a tool it extend the range of the worker रो जो रेंज टा को डेवलप करिवो ब्रॉडन करिवो इट अलाउज accomplishing a task otherwise impossible बेले बेले कोन हुए ना जते बेले देखो हेल्प किए करिवो एमओके तो गोटे गोटे जगह एमओके आल्सो अनेबल टू डू द पर्टिकुलर टास्क तो जो जगह से जिनसटा हुए जनरली पिलांग पाखरे टेंडेंसी कोन आसे ना दैट कांसेप्ट इज इम्पॉसिबल कंडीशन इम्पॉसिबल एक्शन तो एई भले एटीट्यूड तांक पाखरे मध्ये डेवलपमेंट हुए and it is used selectively when needed and scaffolding sobu bele nuhe when it is very necessary for the individual at that time we maintain the process of scaffolding in our teaching and learning process okay so these are the four basic themes of theory of learning okay तो भाइगोस्की करो ए जो थियोरी जो कथाटा हमें पढिलु से थियोरी रे ए चारिटा बेस रु ही क्वेश्चन आसे तो ए चारिटा बेस को हमें भलो भाबरे फॉलो करबा देखिबा कोन आउ माने जो पॉइंट गुडा को मु नोट आउट कली से पॉइंट गुडा को हमें भी खातारे नोट करी की पढ़ी की जीवा एग्जाम रे निश्चित भाव रे एग्जाम रे तमे क्वेश्चन फेस करि परिबो देन भाइगोस्की थियोरी डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ पियाजे ए नंबर ऑफ इंपोर्टेंट वे को वे रे भाइगोस्की और पियाजे कर थियोरी को डिफरेंसेस करा है देखिबा भाइगोस्की प्लेसेस मोर एम्फासिस ऑन द कल्चर अफेक्टिंग और शेपिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो कल्चर रो अफेक्टिंग और शेपिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होउची जो शेप आमे दोउचंदी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बा किए मोस्टली अफेक्ट करूची ना कल्चर अकॉर्डिंग टू भाइगोस्की बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स पियाजे व्यू ऑफ यूनिवर्सल स्टेजेस एंड कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट ओके कारण पियाजे कर जो डेवलपमेंटल प्रोसेस ता थिला दैट शुड बी डिफाइंड इन डिफरेंट स्टेजेस जेमिति कि प्री ऑपरेशनल जो कंक्रीट ऑपरेशनल बा तमरो जो सेंसरी मोटर तो डिफरेंट जो स्टेजेस थिला मु ताको ऑर्डरली कहिली नाही ठीक अछि बट ए जो स्टेजेस डिफरेंट स्टेजेस जो रहिला से डिफरेंट स्टेजेस ता दैट इज यूनिवर्सल इन नेचर समस्त पाखरे हबो एई कथाटा पियाजे कहिले किंतु बा हमें कहिबा गुटे पर्टिकुलर स्टेज रे पिलाटा अछि बेले बेले जेमिति हुए ता पाखरे जो डेवलपमेंट होबा कथा हेई नाही तो एक्चुअली काहे के हेई नाही ना बिकॉज़ द सराउंडिंग और द इफेक्ट ऑफ कल्चर से जो कल्चर रहउची जे से जो सोसाइटी रहउची से सोसाइटी सेही भले माने इफेक्ट पके नाही जोथि कि तार जो स्टेज रे जो डेवलपमेंट होबा कथा से डेवलपमेंट हेई पारे नाही किंतु से स्टेज से क्रॉस करि गलानी बा स्टेज रे से अछि काहे कि हो नाही ना ड्यू टू द कल्चर और सोसाइटी तो सेही कांसेप्ट को भाइगोस्की बिलीव कले किंतु पियाजे ताको डिनाई कले सो दैट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन भाइगोस्की एंड पियाजे आउट द डिफरेंस को जिबा भाइगोस्की प्लेसेस कंसीडरेबली मोर एम्फासिस ऑन सोशल फैक्टर तो सोशल फैक्टर ऊपर बेसी इंपोर्टेंस बा एम्फासिस किए देले ना भाइगोस्की कंट्रीब्यूट टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव भाइगोस्की को कथा रहिला कथा अनुसार कोन रहिला जे द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इफ वी वांट टू एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस वी मस्ट नीड द हेल्प ऑफ डिफरेंट सोशल फैक्टर माने हम देखिबा हमर सोसाइटी कल्चर ट्रेडिशंस हम डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस सो एई मानकर इंपैक्ट रे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुए बोली भाइगोस्की कहिले तो पियाजे इज क्रिटिसाइज्ड फॉर द अंडर एस्टिमेटिंग दिस जो पियाजे सी कांसेप्ट रे सी बिलीव करू नथिले कारण सी कहउथिले जे ना आगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो तापर डिफरेंट जिंस डेवलपमेंट हो बा न हो
Then Vygotsky places more emphasis on the role of language in cognitive development जो कथा मु जस्ट आगुर कहि गली तो Vygotsky को कथारे अनुसार कोन ना आगे लैंग्वेज फर्स्ट कॉग्निटिव सेकंड किंतु पियाजेंकर क्रिटिसाइज रहिला कोन ना से कहले लैंग्वेज सॉरी आगे कॉग्निटिव प्रोसेस टा फर्स्ट देन लैंग्वेज ए थ्रू भी बेले बेले क्वेश्चन आसे तो ए कांसेप्ट को आमे टिके देखिबा language is the primary cognitive secondary according to Vygotsky cognitive primary language secondary that is according to Piaget. So these are the basic and important differences between Vygotsky theory and Piaget's constructivism theory. Then the last part, that is educational implication of Vygotsky's cognitive development theory. The educational implication of Vygotsky's cognitive development theory are: learning is child centered. The first and the most important educational implication, that is when we maintain the cognitive process of teaching or constructivism, cognitive constructivism process of teaching in our classroom or in our educational setup, we found learners by the process of teaching is become child centered. Okay, Vygotsky's cognitive development focus on child centered learning in the classroom. Then learners are active. Okay, learners are active in nature जो constructivism process रे. It is the in the classroom application, the Vygotsky's cognitive theory, learners play an active role instead of passive one. The next one is social interaction. जेहेतु social constructivism theory, so it social interactions are very important. Vygotsky's theory believe that cognitive functions are facilitated by social interaction, due to which learner need to engage in the same. Then learning by discovery, another impact of the constructivism theory to our educational system, that is Vygotsky's cognitive development theory also focuses on learning by discovery and exploration. निजको निजे 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 discover करिबा, निजको निजे explore करिकि सिखिबा, that is another important impact of cognitive process or sorry constructivism process in our educational system. The next one is the focus on knowledge improvement. Vygotsky's cognitive development theory enables learner to gain skills and problem solving, inquiry, self-determination and critical thinking. Okay, जदि आमे constructivism approach को properly use करूचंती in our classroom setup, then we found skill development, problem solving ability, inquiry capacity, self-determination concept and also critical thinking. Then challenging tasks are included. Okay, तो जो माने constructivism approach रे जो माने बहु बार teaching नहीं थिबे बा पढ़ी थिबे, so they are very challenging in nature. They should easily take the challenges from the opponents. Okay, Vygotsky's theory also believe in the provisions of challenging group tasks that are cooperatively and collaboratively. तो से माने group रे group activity रे विभिन्न challenges को accept करिकि ताकू solve करिया पई चेष्टा करंती. Then foster the development of the learners. कौन teachers must be focus all round development. Okay, teachers सब बेले एई केस रे कौन करे ना all round development ensure करिया पई चेष्टा करे of learners. Instructional method should be such that is to comprehensible, पूरा comprehensible रहिबो to learners and foster their growth and development in a fullest form. Totality ऊपर केमिति growth and development होबो सेही कथा को ensure करा जिवो if we maintain social constructivism approach given by Vygotsky in our teaching and learning process. Okay, so these are all about your Vygotsky social constructivism theory. Thanks for watching. आउ आगो को नुआ नुआ वीडियो पई हमें देखिबा, आगो क्लास नै कि आसीबा, आउ एग्जाम पर्यंत हमें चेष्टा करिबा किछि कांसेप्ट को डिस्कशन करिया पई. थैंक यू अगेन.